So you're getting the latest visuals from Bengaluru, where Prime Minister Modi is attending an event to open US aircraft manufacturer Boeing's largest overseas facility in the southern Indian city of Bengaluru in Karnataka. The campus is spread over 43 acres and promises to develop India and Devanahalli in Bengaluru as a global aerospace and defense industry hub. All right, if you're just tuning in, you're getting the latest visuals from Bengaluru of India's Prime Minister Narendra Modi, who will shortly inaugurate a state-of-the-art campus of the Boeing India Engineering and Technology Center in the city. The 43-acre campus is Boeing's largest such investment outside of the US. Boeing's new campus in India will help develop the next generation products and services for the global aerospace and defense industry. Right, and some more additional information on this story. This new facility at Aerospace Park at Devanahalli on the outskirts of India's IT capital Bengaluru is to be inaugurated very shortly by the Prime Minister. Boeing will co-partner with India to execute high-quality advanced aerospace projects. This facility will support in providing required engineering expertise to Boeing's defense, space and commercial sectors. Now, the center will play an important role in co-development initiatives for the Indian Defence Forces as well. The facility will leverage labs and state-of-the-art technologies such as artificial intelligence and Internet of Things for collaborations with India. It's expected to generate thousands of jobs for the people in the local area as well. And to put it into context for our viewers who might be tuning in just now, India's commercial market is expected to be third largest in the world by the year 2041. And Boeing forecasts India's carriers will need 2,200 new planes over the next 20 years. And that will be a key focus area for the US aircraft manufacturer as well. Now, Boeing's commercial expansion plans also in line with the growing demand for aircraft in India, creating an infrastructure and network for facilitating flight connectivity across the length and breadth of the country. And just yesterday on Thursday, Boeing won an order for 150 MAX jets from India's newest airline at the Wings Aerospace Expo. All right, if you're just tuning in, viewers, you're watching the latest visuals of India's Prime Minister Narendra Modi's visit to the southern Indian city of Bengaluru in Karnataka, where he will shortly inaugurate a state-of-the-art campus of the Boeing India Engineering and Technology Center in the city. It's a 43-acre campus. It's Boeing's largest such investment outside of the US. And that's the visuals of the inauguration of the Boeing facility in Bengaluru. The new campus will help develop the next generation products and services for the global aerospace and defense industry.
All right, joining me for more on this news is my colleague Ayesha Khanam, who is standing by in Bengaluru. Ayesha, walk us through the latest on the inauguration of this state-of-the-art facility. Narendra Modi has just inaugurated this huge facility of Boeing India, and this facility over 43 acres of land in Bangalore, which is close to Bangalore International Airport, situated in Devanhalli. Now, this is the aerospace park wherein this facility has come up, and this will be an avionics hub for Boeing India, wherein Boeing India will focus on innovations and research and building new technologies for its own products. And also Boeing India will train pilots here, and this will be the center for the future technology and for future products of Boeing India. So right now, Prime Minister Narendra Modi has been briefed about the Boeing India's presence in India and its partnership. Remember, Boeing India and India has a partnership of over 80 years, and this has translated into investments up to over 8,000 crores, where Boeing now wishes to take it and double this investment in India. So with this facility, Boeing hopes that the new innovations and the new technology will help them contribute and facilitate in coming out with better projects. Remember, Dreamliner is one civil aviation aircraft, the domestic airliner, and this aircraft has undergone several technological changes, and Dreamliner is the future aircraft. So Boeing India looks at innovation technologies, research, and this way Boeing India hopes that this avionics hub will contribute and bring together India and US as more serious strategic partners. Also, Ayesha, talk a bit, if you will, about Devanhalli itself. We are told the city of Bengaluru is now expanding northwards, and Devanhalli is positioning itself as a new hub of global defense and aerospace industry, is it not? Yes, absolutely. Devanhalli has a very strategic location, because this is very close to the Kempegowda International Airport, which is a new facility promoted and built by Karnataka government. And then on the other hand, the Yelahanka Air Base is very close to Devanhalli. So for Boeing, this is a win-win situation, because on one hand, you have a international airport. On the other side, you have a defense airfield, wherein Boeing is contributes to both the areas, the domestic aircraft as well as defense military equipment. So this way, for the aerospace industries, this is the ideal location from where Boeing and other aerospace companies can build a better supply chain and contribute towards Make in India and Atmanirbhar vision by Prime Minister Narendra Modi. Right now, Prime Minister is meeting the engineers from Rochelle Technologies, who explain to the Prime Minister in sign language. Rochelle Technology is a partner with Boeing India, and they have engineers, they have aerospace engineers who are especially enabled engineers, and they have explained to Prime Minister about the assembly line. And then we'll move on to meet the girl students who are here to participate in the Sukanya program. This is a CSR initiative by Boeing India, and this Sukanya program is aimed at motivating and encouraging women, and especially the girl students, to take up aviation and fulfill their dreams as pilots or aviation experts. So this is a very ambitious project that Boeing India is starting as a CSR activity on the sidelines. And this project has attracted several students from across the country. There are students who have come from Nagaland, students from Delhi, students from Chennai, and local students. So all these girl students will be given training under the STEM, that is science, technology, engineering, and maths labs. And through these labs, motivated to take up aviation as a career. Indeed, as my colleague Ayesha was pointing out, the news coming in just now, Prime Minister Modi has inaugurated a state-of-the-art campus of the Boeing India Engineering and Technology Centre in Bengaluru.
It's a 43-acre campus, and it's Boeing's largest such investment outside of the US. And as my colleague Aisha was pointing out, Boeing's new campus in India will help develop the next generation products and services for the global aerospace and defense industry. And the PM will also take part in a Sukanya program for the girl child, as well as part of the CSR activities of Boeing India's campus in Bengaluru. Right, so if you're just tuning in, viewers, India's commercial market in the aerospace industry is expected to be the third largest in the world by the year 2041. And Boeing forecasts that India's carriers will need 2,200 new aircraft over the next 20 years. And that, Boeing says, will be its key focus area, operating out of its new facility in Bengaluru in southern India. Now, Boeing's commercial expansion plans are also in line with the growing demand for aircraft in India, creating an infrastructure and network for facilitating flight connectivity across the length and breadth of India. And just yesterday, on Thursday, Boeing won an order for 150 MAX jets from India's newest airline at the Wings Aerospace Expo. Right, just recap for the benefit of viewers tuning in. Prime Minister Modi of India has just inaugurated, and those are the visuals on your screens right now, of a new campus of Boeing India in Bengaluru in southern India. Right, if I can quickly walk our viewers through these visuals that we're playing out just now. The new facility of Boeing India at Bengaluru is at the Aerospace Park at Devanahalli on the outskirts of the city of Bengaluru. And it has just been inaugurated by the Prime Minister. And there you can see the Prime Minister interacting with more members of civil society and local officials on the premises of the new facility of Boeing India. And as we stay on these visuals, let me just quickly walk our viewers through the Boeing India's plans for India. Now, Boeing will co-partner with India to execute high-quality advanced aerospace projects. This facility will support in providing required engineering expertise to Boeing's defense, space and commercial sectors as well. The campus will play an important role in co-development initiatives for the Indian Defence Forces too. And this facility will leverage labs and state-of-the-art technologies such as artificial intelligence and the Internet of Things for collaborations with India. It's expected to generate hundreds and thousands of jobs for the locals as well. Now, Boeing has a long-standing journey in defense sector in India in particular. The India-US partnership has led to Boeing and India working closely, wherein Boeing has offered its defense equipment for Indian armed forces as well. For example, the Boeing C-17 Globemaster has proven to be the backbone of India's Air Force, and it was deployed in crucial and successful operations in the country during evacuation of Indians from Ukraine, and also to deliver COVID-19 vaccines and other medical supplies to countries in urgent need of the same. And the custom-made Boeing B777 VVIP aircraft is used by the President, Vice President and the Prime Minister of India on international visits too.
Right, so as we stay on these visuals, coming to you from Bengaluru in southern India, the new campus at High-Tech Defence and Aerospace Park in Devanahalli on the outskirts of Bengaluru will become a cornerstone for partnerships with the vibrant startups, private and government ecosystems in the country, and will also develop the next generation products and services for the global aerospace and defence industry as well. At the inauguration ceremony. Namaskara, Nimma Kripya Upasthiti Gagi Dhanyavada. We welcome all of you esteemed dignitaries, central and state government officials, senior leaders of Boeing, members of the Boeing family, members of media and guests to the inauguration ceremony of the Boeing India Engineering and Technology Center campus and the Boeing Sukanya program. To all of our honored dignitaries and guests, namaskara. Welcome not only to a proud milestone for Boeing, not only a proud milestone for India, but also to a new era. We have always had a sense of India's destiny to be a global leader and a foremost partner for freedom. And yet, when we asked when India would become one of the most important markets for aviation and defense in the world, many experts for so many years said, someday. And we said, when will India develop the technologies of tomorrow? And they said, someday. And we said, when will India manufacture the most advanced parts, the most advanced components, the most advanced airplanes, and produce them at the highest quality in the world? And they said, someday. And we asked, when will women lead the way in aviation? And still they said, someday. Devi aur sajno, wo din aa gaya hai. Bharat mein wo din aaj hai. Aaj aapka swagat hai. Someday has arrived, someday is today. And so it is the honor of a lifetime to greet the dignitaries who have joined us. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, thank you so much for being here. The Honorable Governor of Karnataka, Shri Gehlot ji, the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah ji, Shri R. Ashoka ji, and of course, the Chief Operating Officer of the Boeing Company, Ms. Stephanie Pope. Welcome to the inaugural of Boeing's world-leading center. Welcome to the inaugural of Boeing's Sukanya program for women in aviation. And welcome to someday.
Thank you, Dhanyavad, and Jai Hind. थैंक यू सर। बोइंग की ओर से हम ये कहना चाहेंगे कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के लॉन्च को व्यक्तिगत रूप से देखने और इस नए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर के उद्घाटन की शोभा बढ़ाने के लिए समय निकाला। आपकी उपस्थिति हमें प्रोत्साहित करने का काम करती है सर, और हमें भारत और भारत के लिए और अधिक से अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है सर। Truly, a new era for the aerospace industry in India begins today with this committed and invested step in the right direction by Boeing. May I now request the Chief Operating Officer of the Boeing Company, Ms. Stephanie Pope, to render the special address of this very important occasion. Good afternoon. I want to thank Prime Minister Modi, honorable ministers, our Boeing partners, customers, and colleagues for being here today as we celebrate the inauguration of the Boeing India Engineering and Technology Center and the launch of the Boeing Sukanya program for empowering women on increasing women pilots in aviation. Today marks the latest chapter in decades of collaboration and partnership between Boeing and India. Prime Minister Modi, your focus on growth of aviation in India has been instrumental in making these programs a reality today. We are truly grateful for your continued support and look forward to working together to shape the future of aerospace. First, I want to address the new Engineering and Technology Campus, which the Honorable Prime Minister just unveiled. At Boeing, we take pride in our pursuit of innovation, collaboration, and a relentless drive for excellence. Our vision is to shape the future of aerospace and defense, and the Completion Center today makes a significant milestone in that journey. This new campus is a testament to Boeing's engineering legacy and our belief in the availability, depth of talent, and capability that exists here in India. It represents our unwavering commitment to this great nation and its talented workforce. This center will serve as a hub for innovation, fostering collaboration with customers, partners, academia, and startup. Through these partnerships, we will create a thriving ecosystem that propels India to the forefront of the global aerospace industry. This campus will also be the center of our co-development efforts in developing new aerospace and defense technologies from the ground up that meet not only India's requirements, but serve the world. Engineers here will drive India's ambition of world-class development, from design, development, testing, and certification. Ultimately, our campus will become one of the most cutting-edge examples of the Prime Minister's Self-Reliant India initiative. This campus is where we will shape the future of aerospace and defense for India. To achieve this, we need a highly skilled and diverse workforce, which is the very reason behind the Boeing Sukanya program. Prime Minister Modi, this was your idea, and it is with great pride that we have created a program to accelerate opportunities in aviation for Indian women from all walks of life. This program will break barriers, inspire more women to pursue careers in aerospace, and create an environment where they can excel with dedicated training facilities, curriculum, flight simulators, scholarships, and career opportunities. In addition to the pilot training and initiatives, the program will provide STEM labs in middle schools, inspiring and empowering young women from across the country. Through our shared values and vision,
Boeing and India are committed to embracing diversity, pursuing excellence, and driving innovation. Together, we will shape the future of aviation and make a positive difference for the people of India and around the world. Thank you all for joining us here today on this very special moment. Thank you, Mr. Chief Operating Officer of the Boeing Company. May I now please call upon the determined, the visionary and the dynamic Chief Minister of Karnataka, Shri Siddharamaiah ji, to please address the audience. Sir, the people of Karnataka look towards your able leadership to take them into the next phase of this great state's growth story. We at Boeing hope to contribute to the new tomorrow you've envisioned for the people of Karnataka. Please, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Sri Tawar Chand Gehlot ji, Leader of the Opposition, Karnataka Legislative Assembly, Sri R. Ashok, Miss Stephanie Pope, COO, the Boeing Company, Sri Salil Gupta, President, Boeing India and South Asia, all distinguished guests, friends from media, ladies and gentlemen. It is indeed my pleasure to be here with you, surrounded by the splendor of the 43-acre Boeing campus near the International Airport, as we witness the launch of two important Boeing initiatives by our Honorable Prime Minister. This occasion adds yet another feather to the illustrious cap of Karnataka, a state that has consistently stood at the forefront of technological advancement in India. Karnataka proudly holds the title of being the fourth largest technology cluster globally, ranking first in the India Innovation Index and leading in total exports among all Indian states. Our state is home to 400 of the Fortune 500 companies, excelling in R&D centers, renewable energy, and earning the well-deserved recognition as the startup capital of India. The abundance of the talented workforce and skilled manpower makes Karnataka the natural choice for technology and knowledge-driven industries. It is no wonder why the state is the preferred destination for investments, and I wish to reiterate our unwavering commitment to providing a conducive ecosystem for businesses to thrive. In our pursuit of an investor-friendly environment, we have crafted sector-specific and pro-industry policies. Today's inauguration of the new Boeing India Engineering and Technology Center campus is a testament to our continued dedication to fostering an ecosystem that propels progress in the global aviation sector. I am particularly pleased that Boeing has chosen to establish this expansive facility near the International Airport, an emerging hub for numerous future developments, including aerospace and defense. Karnataka has proudly held the mantle of being the aerospace hub of the country, commanding over 65% of aerospace and defense exports. This new endeavor by Boeing will undoubtedly create more opportunities
for our talented professionals to work on global scale projects, aligning seamlessly with our vision of enabling development across the state. However, our commitment to progress extends beyond technological advancements. It includes a commitment to inclusivity and accessibility. To this end, we are dedicated to empowering our girl children and women across the state. Karnataka has long supported the indomitable spirit of women and their invaluable contributions to our society. I am especially thrilled that this launch of Boeing Sukanya program is not just a milestone for Boeing, but also marks a significant project for women in aviation. The land that has witnessed many dreams come alive for women in aviation is so. With this, I conclude my speech. Thank you all. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, sir, for your inspirational address. आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए धन्यवाद, मुख्यमंत्री महोदय। बोइंग में हम एरोस्पेस क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के आपके दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। आप ही के मार्गदर्शन में बोइंग टीम ने सुकन्या कार्यक्रम बनाया, जो इस क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा की पूरी यात्रा का समर्थन करेगा। भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में अधिक महिला पायलट्स का प्रवेश हो, ये हमारा समर्पित प्रयास रहेगा। अधिक से अधिक बालिकाएं भारत के विमानन कार्यबल में प्रवेश करें, ये हमारा लक्ष्य है। Let us watch a short film that tells the story of the Boeing Sukanya program, how Sukanya is perhaps a girl in a small town somewhere in my incredible India, and her dreams and aspirations will find wings with the Boeing Sukanya program. India already leads the world statistic of percentage of women pilots, with 15% of our pilots being women, far ahead of the global average of 5%, ladies and gentlemen. The Boeing Sukanya program aims to further advance this status quo. आइए देखें बोइंग सुकन्या प्रोग्राम पर आधारित ये लघु फिल्म, जो खास आज इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बनाई गई है, under the guidance of the Honorable Prime Minister's vision, the Boeing Sukanya program. Sukanya, a young girl in a remote village of India. Baba, why is sky so high? Mom, what is there beyond clouds? Looking up at the kites that paint the sky, Sukanya dreams of flying amongst them and higher. Sukanya dreams of becoming a pilot. Chacha, मैं तो pilot बनूंगी. Some of the village men say it's impossible. But little do they know that her dreams would soon cross paths with the Boeing company's initiative, marking the beginning of an extraordinary adventure. India, with its rich history of reaching for the skies and beyond, has had many women in the lead over the years. Boeing, a trusted partner in India's skies for over 8 decades, is now elevating this status quo. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, shared by the President and Chief Executive Officer of the Boeing Company, Dave Calhoun, a revolutionary initiative is underway, the Boeing Sukanya program. Sukanya's dreams are no more just dreams. Sukanya now studies in one of the STEM labs established by Boeing in government schools across the country. The lab serves as an incubator of knowledge, technology, and inspiration, aiming to engage with over 75,000 students like Sukanya.
In her university, Sukanya has numerous digital products for training. With Boeing's commitment, Sukanya also has access to hard assets in flight schools. The Boeing Sukanya program also helps her financially through a scholarship for her pilot training. This support becomes the wind beneath Sukanya's wings, propelling her towards her dream of becoming a pilot. Sukanya is now a pilot. Inspiring the aspirations of thousands of young girls like her in India's Tier 2 and 3 towns. Just like Sukanya, the rock-solid educational and training foundation laid by Boeing aims to increase the number of women pilots in India. To create such opportunities for women in aviation roles, Boeing plans to partner with other airlines and industry stakeholders. Boeing's audacious goal of having girl pilots from the remotest villages of India promises to transform industry and societal norms for a more inclusive tomorrow. Through the Boeing Sukanya program, Indian women will write a narrative of empowerment, breaking barriers and ushering in a new dawn, where the sky becomes a limitless playground for every girl child in India. Their dreams take wings and soar the skies. हमारी यही आशा है कि भारत की सभी पुत्रियों को, सभी कन्याओं को ऊंची से ऊंची उड़ान भरने का अवसर प्राप्त हो. The Boeing Sukanya program under the guidance of India's Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. देवियों और सज्जनों, नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में मानो एक नए युग का आरंभ हुआ है. भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह उत्तर से हो, पश्चिम से हो, पूर्व से हो या दक्षिण से हो, एक नए भारत के निर्माण के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व की छत्र छाया में अपने आप को ऊर्जावान पाता है. हम जो एक नए भारत के निर्माण का जोश देख रहे हैं ना, ये अभूतपूर्व है. एक नया भारत उड़ान भर रहा है और परिवर्तन, प्रगति और विजय की इस उड़ान के मुख्य संचालक, हमारे प्रिय व लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधान सेवक, एक शक्तिशाली वैश्विक नेता और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हर सांस, जिनका हर कदम भारत और सभी भारतवासियों के लिए समर्पित है और हमेशा समर्पित रहेगा. इस ऐतिहासिक अवसर को संबोधित करने के लिए हम भारत के महानतम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन करते हैं. India's Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, sir, please address this event. कर्नाटका के गवर्नर श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धारमैया जी, कर्नाटका विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक जी, भारत में बोइंग कंपनी की सीईओ श्रीमती स्टेफनी पोप, अन्य इंडस्ट्री पार्टनर्स, देवी और सज्जनों, मैं विदेश से आए सभी अतिथियों का बेंगलुरु में विशेष अभिनंदन करता हूं. बेंगलुरु एस्पिरेशंस को इनोवेशंस और अचीवमेंट से जोड़ने वाला शहर है. बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है. बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी
बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ये ग्लोबल टेक, रिसर्च और इनोवेशन, डिजाइन और डिमांड को ड्राइव करने के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। और इसलिए मैं बोइंग की पूरी मैनेजमेंट को, सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज कर्नाटका वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पिछले साल कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनकर पूरी हुई थी। अब ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी उन्हें मिलने जा रहा है। ये दिखाता है कि कर्नाटका किस प्रकार एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मैं विशेष रूप से भारत के युवाओं को बधाई दूंगा, क्योंकि इस फैसिलिटी से उन्हें एविएशन सेक्टर में नई स्किल सीखने के अनेक अवसर मिलेंगे। साथियों, हमारा प्रयास है कि आज देश के हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। और आपने G20 समिट में हमारे एक संकल्प को देखा होगा। हमने दुनिया के सामने कहा है, अब समय आ गया है विमेन लेड डेवलपमेंट। एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं। चाहे फाइटर पायलट्स हो या फिर सिविल एविएशन हो, आज भारत महिला पायलट्स के मामले में लीड कर रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से 15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा।
इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी। साथियों, अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा है कि कैसे भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस सफलता ने देश के नौजवानों में साइंटिफिक टेम्पर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत स्टेम एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हब है और बड़ी संख्या में भारत में लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई करती है। और मुझे याद है, मैं कभी मेरी विदेश यात्रा के समय एक देश के बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहे थे कि क्या भारत में बेटियां इस स्टेम की तरफ रुचि रखती है क्या, वहां पढ़ती है क्या? और जब मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ मेल स्टूडेंट से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट की संख्या इसमें ज्यादा है, तो उनके लिए सरप्राइज था। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को भारत की बेटियों के इस सामर्थ्य का भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी ने एविएशन मार्केट के रूप में भारत की ग्रोथ को स्टडी भी किया है और उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत का एविएशन मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज एविएशन सेक्टर से जुड़ा हर स्टेक होल्डर नए उत्साह से भरा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर स्टेक होल्डर भारत में नई संभावनाएं तलाश रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। एक दशक में भारत में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो जा चुकी है। इसमें उड़ान जैसी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब अगले कुछ वर्षों में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की ये संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इतनी बड़ी डिमांड को देखते हुए ही हमारी एयरलाइंस ने सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। यानी भारत दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ऊर्जा देने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। एक समय था जब पुअर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहां बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा था। इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत
दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। 2014 में भारत में 70 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज देश में 150 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए, बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है। फ्रेंड्स, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। फ्रेंड्स, अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बनी रही है और तेज हो, इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है। हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्सेस को कम किया जाए। एयरक्राफ्ट लीजिंग को भी हम आसान बनाने में जुटे हैं। हमारा प्रयास है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग में भारत की ऑफशोर डिपेंडेंस कम हो। इसलिए गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। इसका लाभ भी पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी ये सही समय है। ये उनके लिए भारत की तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। बीते 9 सालों में हमने लगभग 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये करोड़ों भारतीय अब एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत में हर इनकम ग्रुप में अपवर्ड मोबिलिटी देखी जा रही है। भारत का टूरिज्म सेक्टर भी तेज गति से एक्सपांड कर रहा है। यानी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई संभावनाएं बन रही है। आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, जब भारत में इतनी संभावना है, तब हमें भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी तेजी से निर्माण करना होगा। भारत में एमएसएमईज का एक सशक्त नेटवर्क है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। इसलिए
ये हर सेक्टर के लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे विश्वास है भारत में बोइंग के पहले फुल्ली डिजाइन, बोइंग के लोग सुने, फुल्ली डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत की एस्पिरेशंस और आपकी एक्सपेंशन ये एक मजबूत पार्टनरशिप के रूप में उभरेगी। आप सभी को इस नई फैसिलिटी के लिए फिर से शुभकामनाएं और विशेष रूप से दिव्यांग जनों को लेकर के आपने जो काम किया है, और सिर्फ मुझे जिनसे मेरा मिलना हुआ और जिस प्रकार से मेरे से बात हो रही थी, मुझे सिर्फ एक व्यवस्था मात्र नहीं दिख रही थी, मुझे उसमें एक इमोशनल टच फील होता था। और बोइंग की टीम के कन्विक्शन के बिना ये इमोशनल टच संभव नहीं है। मैं इसके लिए बोइंग टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के वैभवशाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। Sir, thank you very much for gracing this inauguration ceremony of Boeing India Engineering and Technology Center campus. जोरदार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका कि आप समय निकाल आज यहाँ आए। Ladies and gentlemen, as the Honorable Prime Minister departs from the venue, please do remain seated until he exits the venue. We will wait for our senior dignitaries to also leave the venue smoothly. All right, you're watching the live coverage of India's Prime Minister